the, एक minute. Yesterday we was doing about the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वी डिड अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाट वी डिस्कस्ड कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बिहेव करता है, बिकॉज से सपोज इट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये डिसोसिएट होके कैसे हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया एंड क्या हुआ, H प्लस आयन रिलीज हो गया. तो ग्रेड 10th में वी हैव ऑलरेडी डन कि H प्लस आयन का मतलब क्या हो गया कि एसिडिक नेचर है. अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस पोलर OH ग्रुप क्या हुआ, ये आयोनाइज हुआ इनटू अ H प्लस आयन, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ एसिड. दूसरी चीज जो हमने कल करी थी वो क्या करी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि ये एंड कार्बोक्सिलेट आयन मींस ये है, तो जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है इट इज गोइंग टू बी अ मोर स्टेबल. Why it is going to be a more stable? Because of the resonance. इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एंड दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये आइडेंटिकल है. ओके, नाउ जो मेन यहाँ पे टॉपिक है या जहां से यू कैन से कि हमें क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, वो क्या है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखिए आपके जो इस केस में जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलेट आयन, ये दोनों ही क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. नाउ रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है बट व्हाट वी हैव सीन कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा है. Why? Because जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आयोनाइज हो जाता है. आयोनाइज क्यों हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है टू गेन द स्टेबिलिटी. ठीक है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए खुद को कन्वर्ट कर लेता है इन द कार्बोक्सिलेट आयन. अब दूसरे फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे वो कौन से होंगे, जो दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स कि yes, so the factors which are going to affect over here, the first factor is going to be what? First factor is going to be the effect of electron withdrawing group या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. अब देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा. जब वो अपनी तरफ पुल करेगा सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड. अब जब आपकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिलीज ऑफ H प्लस आयन and stabilization of carboxylate anion.
is going to take place. How? By dispersal of negative charge. तो ओवरऑल क्या फैक्टर आया यहाँ पे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्ट्रेंथ जो होगी एसिड की वो इंक्रीज हो जाएगी. हैव यू नोटेड डाउन दिस? मैम वेट. ओके. यस मैम. डन. डन. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड. एंड फिर से बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में से 100% अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ढंग से नोट डाउन कर लेना एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. नाउ सेकंड फैक्टर क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. अब मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप. ये है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इट मींस व्हाट? इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड. इंटेंसिफाई का मतलब कि वहां पे काफी सारा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा. अब जब वो इंटेंसिफाई हो गया वहां पे तो क्या हो गया कि जो आप एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो क्या करेगा? इट विल अफेक्ट एडवर्सली इफेक्ट अफेक्ट रिलीज ऑफ H+ आयन, बिकॉज ऑफ विच इसकी वजह से क्या हुआ कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो गया. देन थर्ड फैक्टर इज कि आपकी जो भी एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इट डिक्रीजेस विथ लार्जर एल्काइल ग्रुप. ये हम लोग कर भी चुके हैं कि अगर आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है तो एल्काइल ग्रुप बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, या फिर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है. एल्काइल ग्रुप as plus I effect of alkyl group increases with size. मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड है. ठीक है. अब फॉर्मिक एसिड का साइज तो छोटा है, प्रोपेनोइक एसिड का साइज बड़ा है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो प्रोपेनोइक एसिड होगा इट इज गोइंग टू बी अ वीकर एसिड इन द नेचर. ठीक है. नेक्स्ट fourth point is acidity increases with the increasing number of electron withdrawing group on alpha carbon.
अगर अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो उसका डिस्टेंस जो है बहुत कम होगा, isn't it? So therefore your acidity is going to increase. For example, say suppose मेरे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। अब एक मेरे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड, तो क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो गया, यहाँ पे Cl, यस। फिर एक मेरे पास है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो का मतलब क्या हो गया, Cl2CH COOH। फिर एक हो गया मेरे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, नोटेड एवरीवन। Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज acidity increases with increasing electronegativity of substituents. Okay, now for example मेरे पास क्या है, आयोडो एसिटिक एसिड है, I am having the bromoacetic acid, I am having the chloroacetic acid and a fluoroacetic acid. अब इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन इज गोइंग टू बी अ मोस्ट एसिडिक इन द नेचर, एंड आयोडीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो आयोडीन इज गोइंग टू बी अ लीस्ट एसिडिक इन द नेचर। क्लियर? देन सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट, कि जो आपकी एसिडिटी होती है, acidity gets decline with increasing distance between electron withdrawing group and COOH group. For example, मान लीजिए हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड है, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड है and 4 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो आपका 2 क्लोरोब्यूटेनाइल, it is going to be the most acidic in the nature if we are going to compare these three. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आपका हो गया unsubstituted aromatic carboxylic acid are stronger acid than
unsubstituted aliphatic carboxylic acid. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिटिक एसिड. क्लियर? सो अप टू हियर एवरीवन हैज नोटेड? Ma'am, wait. ओके फाइन. Yes, ma'am, done. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट जो है आपकी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट द बेंजोइक एसिड ओनली. इफेक्ट ऑफ effect of substituent on acidic strength of benzoic acid. Okay. Now over here, the first one is going to be a electron releasing group. अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, so what is going to happen? It is going to decrease acidic strength. अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, so what is going to happen? It is going to increase the acidic strength. Okay, these both in context to the benzoic acid only. The second one is what? That we are orthoisomer of benzoic acid. It is going to be a strongest among all other isomers. Okay, why? Because of the ortho effect आप कह सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं that due to the combination of steric and electronic factors. Then the third one, acidic strength effect of electron withdrawing group is going to be more at para position than at meta position. Fourth one, acidic weakening effect of electron releasing group substitute more at para position than meta position. Okay, now ये जो दोनों points we have done, from here we get the questions like the give reasoning or the arrangement questions. Clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Fine. So let's move to the chemical reactions now. In the case of chemical reaction, the first reaction over here is what? Reaction involving cleavage of
OH bond. ठीक है. Now over here, what is going to happen? जब इसकी cleavage होगी, it means over here the reaction is going to take place between the metal with alkalis. Okay. Now, for example, we have taken any carboxylic acid. It is reacting with the sodium metal. So what is going to happen? First of all, it is going to convert into a sodium carboxylate plus H2 is going to release. Now, this is having the negative charge. This is having the positive charge over here. Say suppose अगर मैं सोडियम मेटल की जगह हाइड्रोक्साइड ले लेती प्लस NaOH, क्या हो जाता? I would have got the same sodium carboxylate ion, but instead of hydrogen gas, it would liberate the water molecule. Third possibility, that we have taken a bicarbonate. So again, the same thing we are going to get, but water molecule and a carbon dioxide gas is going to release. Okay. So ये कब हुआ? When there is a cleavage of OH bond. The second condition, the reactions involving the cleavage of COH bond. Over here, the first one is going to be a formation of anhydride. Now, in this particular case, any carboxylic acid you are going to take H plus ion and heating, or you can take phosphorus pentoxide and heat it. It is going to convert into a anhydride plus water molecule. Noted? Yes, ma'am. B part. Esterification. Esterification we have done in the practicals also, if you remembered, that you have taken any carboxylic acid, take any alcohol, mix them, you are going to get the ester plus water is going to liberate. C part we have already done in the chapter number 11, reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. अगर आपका carboxylic acid is reacting with PCl5, it is going to give acyl chloride plus this. If you are going to take a PCl3, then also acyl chloride and H3PO3. If you are going to take the SOCl2, acyl chloride and SO2 plus HCl. Then we have the reaction with ammonia. So when any carboxylic acid is going to react with the ammonia, whether it is aliphatic or aromatic, first of all, it is going to change into a ammonium ion, and then hydrolysis is water molecule is going to liberate. It is going to convert into a amide. Now, in this particular case, we have one important reaction जो exam में आ जाती है, that is the preparation of benzamide या फिर thelimite. अगर आप benzamide prepare कर रहे हैं, then you are supposed to take the benzoic acid, react with NH3. It is going to first of all give you this intermediate, and this intermediate on heating is going to give you a benza.
might. Plus, water molecule is going to liberate. Another reaction which is important over here is what you are taking this. Now, its common name is a phthalic acid. Now, this phthalic acid, when ammonia, first of all, it is going to give you a intermediate only. This one, आप इसको heat करेंगे, water molecule will liberate, means you are going to get the amide. अब आप इसको और heat करेंगे, so what is going to happen? NH3 is going to come. So when NH3 is going to come, liberate. So what you are going to get? This, and its name is phthalimide. This is important according to the exam. Done up to here? Done? Yes, ma'am. Okay. Next. C part of the reaction is reactions involving COOH group. Now over here, we are having the subparts. The first one is the reduction. Now, when you are required to reduce any carboxylic acid, you can take any of the reducing agent like the lithium aluminum hydride, boron hydride, anything. And in the second step, a hydrolysis is going to take place. So it is going to make the first degree alcohol. The second one is decarboxylation. Now, when you are having a decarboxylation, you need to take a sodium carboxylate. You are going to take a sodium carboxylate in the presence of a NaOH and CaO. You are going to heat. You are going to take a corresponding alkane and sodium carbonate is going to liberate. अगर आप aromatic ले लेंगे, तो you are going to get the benzene. The third one is the halogenation. Now, when we are talking about the halogenation, in the case of halogenation, ये है named reaction. So it is a Hell Walhart Zelensky reaction. So what is going to happen? RCH2COOH. First step, any halogen in the presence of a red phosphorus. Second step में hydrolysis. So you are going to get the carboxylic acid, which is going to be alpha halo carboxylic acid. Okay. Clear? Noted, everyone? Yes, ma'am. Okay. So for today, we are going to do up to here. Tomorrow, I will be